Hello everyone. Good afternoon. I hope you all can hear me and see me. Please write yes in the chat if you can hear me and see me. Thank you for the confirmation. We'll start the session in next 2 minutes. Welcome to the first Nifty expiry of the month. For the people who have attended our morning session, you must have booked profits. Hello Shivangi ma'am, I've sent you a request. Please join in. Great, we can see you. Can you hear me, ma'am? Yes, hi. Hi, we can hear you as well. You can take a minute to settle down, then we'll start the session. Good afternoon, everyone. My name is Anuj Sharma. I am your community manager, your friend, your host, who will be the bridge between our experts and your queries. We'll try to take up as many queries as possible, but since हमारी expiries काफी reduce हो गई हैं, this is the first expiry. We'll try to focus more around the expiry and less around the stock queries that we'll be sharing. Today we have the first Nifty expiry of the month, and tomorrow we have the Sensex. Going forward, ये भी change होने वाली है from January, but for now it's Tuesday and Friday. It's Thursday and Friday for you guys. The morning session, जितने लोगों ने attend किया, you must have all booked profits. Right now we'll focus on our expiry. आप expiry के around जो भी questions drop करेंगे, we'll take it up. And अगर stocks के around अगर आप questions share करेंगे, तो if we have time, then we'll take it up. And we'll definitely share a BTST by the end of the session. I can see some queries have already started coming in. And I guess everybody knows Shivangi ma'am needs no introduction, the Nifty Queen. We hope, ma'am, you will share a profitable trade. Everyone is eagerly waiting. So over to you. You can share your screen and start. Then we are good to go. Thank you so much, Anuj. Very good afternoon to everyone. It's, of course, an exciting day because we've seen a lot of movement in Nifty. I'll just quickly share my screen as well. So overall, we've seen that Nifty has witnessed a strong pull from the bulls, right? If I just draw the zoom in the daily chart for you, look at this how strong the Nifty has performed today. It opened kind of positive, and then it witnessed a little bit of a sell off there and some profit booking at these levels. And then in the second half, in fact, right from the 12 o'clock tick, we've seen that the index has moved one way in a unidirectional manner, and bulls have been fully active. If I just take it to the hourly frame, you can just see how this is. The day, the first 2 hours were a little bit of profit booking, and then after that, for the next, for the last 4 hours, we've seen that there has been complete buying. तो पूरी तरह से bulls active है और strength के साथ active है. Let's look at what has happened to India VIX. We'll quickly see यहाँ पे क्या हो रहा है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि India VIX is slightly up, but still below 16-15 levels, which indicates that there's going to be comfort. But again, ऐसा भी नहीं है कि lower है आज इंडिया विक्स, तो comfortable के साथ volatility भी रहेगी, तो swings काफी रहेंगे. गाइस, आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि काफी लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करते थे एज फॉर थीटा डीके, फॉर टाइम डीके, एंड जो हम वीकली एक्सपायरीज में बैंक निफ्टी के साथ प्ले आउट कर सकते थे, वो अब नहीं पॉसिबल होगा बिकॉज वीकली एक्सपायरीज आर गोइंग अवे फॉर बैंक निफ्टी. सो दैट काइंड ऑफ प्रीमियम जंप और स्विंग्स जो हम बैंक निफ्टी में देखते थे, वो प्लेयर्स सारे निफ्टी में आ चुके हैं बिकॉज निफ्टी इज द ओनली एक्सपायरी वीकली दैट इज लेफ्ट टू प्ले विद. सो कहीं ना कहीं वो स्विंग्स, वो प्रीमियम जंप्स हम देख रहे हैं. इवन लास्ट थर्सडे वी सॉ दिस, एंड वी आर विटनेसिंग दिस इवन टुडे. सो नाउ वी हैव टू लुक एट निफ्टी इन अ न्यू मैनर कि काफी स्विंग्स रहेंगे. लास्ट टाइम भी हमने यही देखा था कि हमने जो प्ले आउट किया था right after 3 o'clock, right after our session, that option hit its target also. So, it's going to be like this. It's going to be very volatile. So, आप अपने risk reward को उस हिसाब से plan out करना होगा.
So this is very important for all of you to understand, because all of you are trading in futures and option, which has to be taken in a risk management way. अगर आपका risk management नहीं है तो आप कभी net पैसे नहीं बना पाओगे. So let's look at the levels quickly. We've seen that 24,500 पे जो काफी कॉल राइटर्स रहते थे वो अब सारे कूल ऑफ हो गए हैं, and there hasn't been much of resistance left now. और 750 का जो एक लेवल था हमारा 24,750 वो भी क्रॉस हो गया है. So next we are looking at 25,000 immediately, और फिर 25,200 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिलेंगे. सपोर्ट के तौर पे इंट्रा आवर सपोर्ट, यानी कि नेक्स्ट 1 घंटे के हम सपोर्ट को अगर देखें तो 24,750 विल बी इम्पोर्टेंट, जो कि इसका एक आर्ली कैंडल में भी इसका एक रेलेवेंस रहेगा. और फॉर द पोजिशनल सपोर्ट वी कैन लुक एट 24,650 लेवल्स. So this is the levels for Nifty to play out with. But हम call के side ही हैं, हम bullish है काफी, and we are expecting this bullishness to continue. Now there are two strikes that I am tracking as of now. 24,800 and 24,850. 850.66 around चल रहा है. If required, we'll go to the 800. But right now I'm tracking 850. Quite comfortable for attempting in this. तो अगर हम देखें तो अभी फिलहाल 65 के आसपास चल रहा है ये कॉल ऑप्शन. So strikes on radar will be 24,850 का call, right? So this you have to just keep on your watch list, on your radar list for quick execution. So फिलहाल ये 55 के आसपास चल रहा है, हम इसको थोड़ा और कूल ऑफ का वेट करेंगे. So if this call nearly touches around 35 levels, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे. 35 पे एंट्री काफी एक अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन रहेगा एंट्री करने को, राइट. तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दिस कॉल टू ड्रॉप अ लिटिल मोर. अभी फिलहाल 55 के आसपास है, और अगर हम देखते हैं कि ये 54 ड्रॉप नहीं कर रहा है, जो कि इसका एक प्रीवियस इम्पोर्टेंट लेवल है. 54 अगर ड्रॉप नहीं करता है, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू होल्ड दीज लेवल्स एंड वी कैन एक्सपेक्ट some sort of good movement here. So we are going to watch out on 24,850 call as of now, right? Nifty का अगर हम 15 minutes या फिर 5 minutes frame भी अगर हम देखें तो पिछले 10 मिनट से कंसोलिडेट कर रहा है, बट गुड पार्ट इज दैट इट इज एट हायर जोन्स. तो 24,800 वो रिस्पेक्ट कर रहा है. सो दिस विल बिकम इम्पोर्टेंट फॉर द नेक्स्ट 45 मिनट्स. 24,800 का एक लेवल है, वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा नेक्स्ट कुछ मिनटों के लिए. सो लेट्स जस्ट क्विकली ट्रैक दिस एज वेल. आज हमारा पूरा फोकस यहीं पे रहेगा निफ्टी के ऑप्शन ट्रेड पे, because it's Nifty expiry and there is a lot of volatility, there is a lot of movement that is happening in index. आज आप कई बार ऐसा भी देखे होंगे कि स्पॉट में मूवमेंट के पहले ऑप्शन में काफी बार अभी स्पाइक आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है. सो कहीं ना कहीं ऑप्शन प्लेयर्स हैव बिकम वेरी स्मार्ट इन दिस मैनर, and they are taking the positions very smartly. So I'm just looking at Nifty, थोड़ा बहुत कूल ऑफ आया है, बट 24,800 अगर होल्ड करता है तो ही हम कॉल लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे हम. We can avoid also because it's a highly risky scenario, right? We can also shift to start tracking 24,800 also अगर जरूरत पड़े तो. And we can see little bit of cool off हो रहा है, और cool off अच्छी तरह से ही हो रहा है. 24,800 को तोड़ चुका है इंडेक्स ने, तो आई डोंट थिंक वी शुड अटेम्प्ट, एंड जल्दबाजी में कोई कॉल नहीं लेना है. सो वी जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट लेवल टू होल्ड. 24,800 important है, right? We have not entered into any trade. Remember, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है. 24,800 is what we are tracking right now. अगर ये थोड़ा और
स्टेबलाइज होता है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे. So I'll just quickly discuss a few numbers as well. Open interest में क्या हो रहा है. So this week, entire week, we've seen that short covering हुआ है. उसके बाद लॉन्ग्स ऐड हुए हैं इंडेक्स में. नेट में हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग ही हुआ है अच्छी खासी, एंड शॉर्ट्स हैव रिड्यूस्ड देयर पोजीशन, सो दैट इज अ साइन ऑफ हाउ द प्राइस वॉल्यूम सर्ज हैज हैपेंड हियर. बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो आउट परफॉर्मेंस हुआ है इस पूरे हफ्ते, और वी हैव सीन 13% ओपन इंटरेस्ट एडिशन ऑन द लॉन्ग साइड. यानी कि जो लॉन्ग साइड में देख रहे हैं, लॉन्ग साइड में पोजीशंस बना रहे हैं, वो काफी स्ट्रांगली अपना पोजीशंस रखे हैं बैंक निफ्टी में. ऑल्दो आज थोड़ी कूल ऑफ जरूर देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में, बट ओवरऑल एंटायर वीक बैंक निफ्टी हैज आउट परफॉर्म and remain stable along with some of the heavyweights, especially PSU and some of the heavyweight like private banks में भी अच्छा एक attraction रहा है. So Nifty Bank has been outperforming, and that will continue to stay strong. Right now Nifty is not holding 24,800 levels. तो अच्छी खासी स्विंग खैर हमने आज सेकंड हाफ ऑफ द सेशन में देखा है. Right now, in the last hour, we are seeing some sort of cool off. तो थोड़ा back off हमें करना चाहिए अभी. We should wait for it to stabilize क्योंकि बहुत volatile है. Right now I can see that the call was at 70 levels, और अब जो है 45 पे आ चुका है 24,800 का. तो काफी swings इसमें बहुत जल्दी आ रहे हैं, and it is very likely that people get stuck in this kind of swings. तो इसीलिए हमारी राय रहती है कि जब swings हो या जब कोई event हो तब हमें थोड़ा शांत रहना है. Tomorrow we have the RBI policy expectations also. तो वहां पे भी थोड़े बहुत expectations है, concerns है, volatility उसके वजह से भी आ रही है. So right now 45 टच करने के बाद अब ये कॉल ऑप्शन वापस 50 के ऊपर चला गया है within like a second. So of course there is a lot of swings जो कि हमें टैकल करना पड़ेगा ऐसे मार्केट में, right? We'll just little wait and watch. We have another 15 minutes. इसमें कोई ट्रेड सेटअप अगर बनता है, so we'll definitely enter into some good position. Do we have the BTST for the day? Okay, so Nifty is above 24,800. If we have to enter into a call, this is a good time. I'll just Anuj continue with the Nifty call as of now, I think. Sure. Yeah, so 24,800 call is now comfortable above 65 क्योंकि निफ्टी जो है 800 के ऊपर वापस स्विंग मारा है. गाइस याद रखें कि ये एक काफी स्विंग और काफी रिस्की पोजीशंस ले रहे हो आप क्योंकि हीरो जीरो है. तो आप 65 से 70 के बीच में एंटर कर सकते हो, बट याद रखिए दीज आर वेरी हाईली वॉलेटाइल स्विंग दैट वी आर विटनेसिंग इन द मार्केट. तो आप अपना पोजीशन साइजिंग उस हिसाब से करें. 60 to 65 के बीच में आप एंटर कर सकते हो. right now it's at 62, and you can aim for a target of around 85 rupees. तो आप ये ध्यान रख सकते हो. It's a small trade that we are doing. के रेंज में आप एंटर कर सकते हो with a target of 80 and a stop loss of 40 rupees. So I'm again, telling you it's a very highly volatile and risky trade because swings बहुत है. So अगर आपके पास उतना risk appetite नहीं है, so I would advise that you can avoid this trade. But अगर आपको लग रहा है that you have the risk appetite, then you might as well take it. So it's totally up to you. But of course, execution में और positioning में careful रहे.
So someone is writing, Balwinder is writing, Madam Ji, profit हुए हैं दिन भर, avoid or trade. I think Balwinder ji, if you are feeling that आप profits पे बैठना चाहते हो, it will be advisable to avoid the trade. Like I said, even before the trade, I told you that it is advisable कि आप ये trade ना लो, क्योंकि ये बहुत ही volatile scenario में हम इसको enter कर रहे हैं. So it's advisable that you don't take the trade. But if someone wants to play such a high volatile trade, then this is the range that one can play out. But हमारा यही advice था शुरू से कि हम ये trade ना लें, right? So this has been a very clear advice, and I think इससे ज़्यादा clear मैं हो नहीं सकती थी, right? So 24,800 call is right now at 48. We just wait. Nifty is also kind of holding above 24,800. तो यहाँ से हम expect कर सकते हैं कि ये option यहाँ पे it should perform. It's the call is at right now 55. Right, 55 पे है ये trade अभी. Okay, the trade is at someone's writing already profit booked. Very nice, नारायण जी. काफी अच्छी बात है, आपने profit book कर ली. So as you can see, it's quite volatile. अभी ये 60 touch करके वापस अब 45 के आसपास है. There are a lot of people who booked profit also, and congratulations to those people. As I told you, it's going to be very volatile and highly risky, right? हम कुछ stocks के बारे में discuss कर सकते हैं in the meanwhile, and I'm sure आपने so I'm seeing a lot of messages that a lot of people have not taken the trade also. Because हाँ, मैंने clearly आपको बोला ही था कि आज आप trade ना लो क्योंकि काफी volatile है, right? तो ये भी आपने advice सुनी, which is very good. Nifty is not kind of holding 24,800 zones. आप exit भी कर सकते हो trade को. A lot of people have already exited the trade, but यही advice रहेगी कि कोई swing मिले तो आप exit का plan कर सकते हो. So let's just look at a few stocks. Realty space has been in a lot of focus. तो हम यहाँ उबराए realty को भी एक अच्छा trade समझ रहे हैं. This is a positional trade. This is not a BTST trade, but this is a stock that one can look out for. And another stock is Lemon Tree. I'm just pulling out the chart. So Lemon Tree is looking quite positive. अपना एक previous hurdle इसने surpass किया है, and very trading very comfortably after the range breakout on the daily frame. Even if we look at the weekly basis chart, it's kind of made a bottom. Base काफी अच्छा बन चुका है यहाँ पे, और फिर एक अच्छे यहाँ पे movement देखने को मिल रहा है. So this is one stock that you can look out for.
145 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे 130 के स्टॉप लॉस के साथ. So lemon tree is a BTST with a target of 145 and a stop loss of 130 levels. So look at BTST for the trade, right? Guys, please check the pinned message for the BTST lemon tree. So काफी लोगों के losses भी हुए हैं, but काफी लोगों के profits भी हुए हैं निफ्टी के option में. Like I said, guys, मैंने आपको बताया था कि it's a very highly risky trade that we are doing today. काफी volatile है market. So you have to cut down or curb down your positions. और आपको अगर risk नहीं लेना है तो आप ना लो trade. उसके लिए भी काफी लोगों ने acknowledge किया है कि हमने नहीं लिया था trade because we don't want to take the risk. So I think it's very good that the community as a whole is very mature trade करते time, and that is a very good thing कि आप अपना risk appetite समझ रहे हो while trading. So right, I think we can take up a few. We have, yes, ma'am. We have a question. What is BTST and how to do it? I guess we have some new people also who have joined in. If you can take this up. Yes, so BTST is basically buy today and then we can sell tomorrow. So basically the view is that stock अगर बहुत अच्छा लग रहा है हम उसके opening gains को capture कर सकते हैं. Of course अगर आपके पास overnight रखने की risk capacity है तो भी आप वो trade लीजिए. But overall when the stock looks quite good movement to continue even the next day, that is when we recommend a BTST. तो हम जैसा समझ रहे हैं यहाँ पे lemon tree में एक अच्छी movement हुई है और हम expect करें कि कल भी ये continue करेगा. So we advise that you can buy it today and then book your profits tomorrow by selling it tomorrow. So BTST is nothing but that. Ma'am, your view on REC Limited. So if we look at REC Limited, yeah, so REC is basically we're looking at the daily frame. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक follow up missing है कहीं ना कहीं. जिस तरह से हम इसके candles देख रहे हैं higher zones पे जाके टिक नहीं पा रहा है ये stock, and resistance is very much intact at 550 levels. So we are not expecting a big pullback move in REC. Ma'am, your view on DLF? So realty space and the related counters are looking quite positive, but अगर हम DLF को देखें तो यहाँ पे कुछ खास movement नहीं देखने को मिल रहा है लगातार पिछले 3 दिनों से. So what you can do is realty space is doing well, but अगर ये stock lackluster है तो आप उन stocks पे focus कर सकते हो जिसमें एक अच्छा movement है and जिसमें एक momentum build हुआ है. So I think you can focus on the other stocks instead of DLF in this space. Ma'am, your view on NTPC? Okay, so we quickly look at NTPC. ये भी एक बहुत ही थका हुआ काउंटर है पिछले लगभग 3 महीनों से, and we've seen that कुछ खास ऐसा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. So I would recommend that आप इसमें ना लो trade, and somewhere it's kind of stuck, no movement expected. Geo Financial for long term? Yes, so Geo Financial for long term has been one of the very favorite stocks of mine that you must have in the portfolio. And Geo Financial की अगर हम positional levels की बात करें तो यहाँ पे आराम से हम
450 750 तक के levels हम देख सकते हैं, but you'll have to keep this stock positionally. ये trading stock नहीं है, बिल्कुल आप रख के इसको you know don't track it on a daily basis, but this stock is going to do good. The positional support levels are intact as of now. Ma'am, BDL 60 shares at 1250. Yes. Ma'am, you're on mute if you're speaking something. Yeah, sorry. So BDL, we've seen that stock काफी lackluster है, and monthly basis पे भी हमने देखा है कि consistently selling हुआ जा रहा है, and there is no signs of recovery as of now. तो BDL भी avoid करने की ही advice रहेगी. We've seen a sharp sell off in Nifty. तो हम जिस movement की बात कर रहे थे वही exactly हुआ है. In Nifty, just look at how Nifty has given up entire gains. लगभग पिछले 5 मिनट में 300 पॉइंट गिर चुका है Nifty. So in the last 5 minutes, so you can imagine the kind of volatility and the kind of swings that are happening. I think it was a very risky trade that I said. जैसे कि मैंने आपको बोला भी था कि आपका risk appetite नहीं है तो आप बिल्कुल enter ना करें. So I think that was a perfect advice that I gave you in the start of the session today. That today is not for the ones who are light-hearted. So yeah. I guess we'll take the last query for the day. Swiggy. Swiggy, I think Swiggy Zomato is one stock wherein there is a lot of attraction on. Zomato has been the first new age company which has come to Sensex, and the kind of movement that we're seeing in the new age companies, चाहे आप Swiggy देख लो, चाहे Zomato देख लो, चाहे आप Paytm देख लो, ये सारे ही बहुत अच्छे कर रहे हैं. बिल्कुल रखने लायक stock है, and Swiggy can touch 600 in no time. So you can continue being in this stock with a support of 515 levels Swiggy. In fact, आप Zomato और Paytm को भी काफी अच्छी तरह से track करो. These stocks are also going to do well. So I think there couldn't be a better question to end the session with, क्योंकि ये एक ऐसी space है which is where I'm quite bullish on. So you can definitely keep these stocks for positional levels. So guys, that will be all. We have shared the BTST. You can check the pinned message. We have few people who have booked profit, few people who have booked loss. It's stock market at the end. जैसा कि मैम ने कहा, we have to be patient. Tomorrow we have the first Sensex expiry. Our Sensex King Madhur sir will be joining. So do join in, and we hope for some weekend profit at the end. Thank you everyone. Thank you Shivangi ma'am.